forward with water, a precious resource from 7th standard. ठीक है? Okay, so in this again, starting off with water is essential for all living beings. This is something that is very basic and we all understand this, correct? Water is found in the three forms: solid, liquid and vapor, or solid, liquid and gaseous state. This is also something that we have told, right? Now water cycle keeps the total amount of water on the earth constant by continuous cycling among its three फॉर्म्स, राइट? ये भी हमने बात किया. अभी मैंने क्या बोला था? देयर आर 4 स्टेप: इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. दिस 4 steps, what it does is, all the water that became vapor went to the atmosphere. It came back again as it came back again in the form of liquid or in the form of solid as snowfall or raindrops, right? So ये तीन states of matter of water, that is solid, liquid and gas. ये जो interchange और ये conversion जो होती रहती है, इससे क्या होता है? अर्थ में जितना पानी है वो बैलेंस रहता है. ठीक है? Water cycle balances the amount of water that is present on earth. All right, moving on. यहां पे हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर की. ग्राउंड वाटर में क्या क्या पढ़ना है? इनफिल्ट्रेशन क्या होती है, वाटर टेबल, एक्विफायर क्या होती है, how the depletion of water table is occurring, why is it happening, what are the reasons, increasing in population, growing industries and increasing irrigation requirement. These are the reasons for depletion of water table. Now अब एक एक करके बात समझते हैं. ठीक है? इनफिल्ट्रेशन क्या है? कौन बता सकता है इनफिल्ट्रेशन क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सी, द इनफिल्ट्रेशन इज बेसिकली द सीपेज. बेसिकली द वाटर, द सॉइल दैट इज देयर, द सॉइल कैन अब्सॉर्ब द वाटर. मतलब पानी जो है सीप करता है, धीरे धीरे अब्सॉर्ब होता रहता है, नीचे जाता रहता है. ठीक है? नाउ द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द पोर्स. पोर्स मतलब छोटे 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 होल्स. ठीक है? द स्मॉल होल्स दैट आर देयर इन द सॉइल, थ्रू दैट पानी अंदर जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन क्या करता है? ग्राउंड वाटर में योगदान देता है, मतलब योगदान करता है, कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है? आर यू गेटिंग इट? इनफिल्ट्रेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ग्राउंड वाटर. क्लियर? ठीक है? And what is groundwater? Groundwater is the water that is stored underground, that is stored under the ground or maybe in between rocks or something. ठीक है? That is known as groundwater. Moving on, aquifer. What is aquifer? A body of hard rock which contain or transmit groundwater. Hard rock, एक बड़ा सा हार्ड रॉक ले लो जो ट्रांसमिट कर सकता है ग्राउंड वाटर को. ठीक है? और या फिर जो ले सकता है, कंटेन, जिसके अंदर हो ग्राउंड वाटर, that those things are known as aquifer. What is aquifer? A body of hard rock which either contains groundwater or it can transmit groundwater is known as aquifer. Then we are going to talk about water table. What is water table? The upper level at which groundwater is found. तो हमने क्या बोला? सॉइल के नीचे है ग्राउंड वाटर, राइट? अब क्या होता है? ग्राउंड वाटर जो है कभी कभार थोड़ा सा ऊपर भी पाया जाता है. तो जब थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है ना, द अपर लेवल एट विच ग्राउंड वाटर इज फाउंड, जहां पे ऊपर वाले लेवल पे जहां पे ग्राउंड वाटर को पाया जाता है, दैट इज नोन एज वाटर टेबल. ऑल्सो वाटर टेबल कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज समटाइम्स अमंग in between the rocks what happens, there is groundwater present. That water can also be known as water table. ठीक है? Now we know that water table is there is a depletion, that is there is a reduction of water table. Water table जितनी थी उससे कम हो रही है. क्यों? Because increasing population. जितने लोग हैं उतनी पानी की डिमांड बढ़ेगी, राइट? तो जितना पानी का डिमांड बढ़ेगा उतना लोग यूज करेंगे वाटर टेबल को. अब हर किसी को तो नदी का पानी मिल नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं और पानी, मिट्टी के अंदर जो पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं. इससे क्या हो रहा है? वाटर टेबल में रिडक्शन हो रही है. ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बनेगी उतनी ज्यादा पानी चाहिए होगी. अब can you even imagine one single industry where there is no water required? I'm pretty sure no, right? I'm pretty sure that every industry that we have in the world, all of them requires water.
So what can we do? If the industries are growing, that means that water will be required, and since more water is required, that means water table is getting reduced. Increase in irrigation requirement. Why is irrigation requirement increasing? That's because we have more population. That means there are more mouth to feed. ज्यादा लोग हैं मतलब खाना ज्यादा चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी मतलब पानी ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए मतलब वाटर टेबल में रिडक्शन हो रही है. So is it clear what is happening, what's going on here? So groundwater we have completed. अब we are gonna talk about water management. Water management में क्या क्या कर सकते हैं? Rain water harvesting, which we have of irrigation, where you take a lot of pipelines and then drip by drip the water just flows away. Water just flows on. ठीक है? It is a system that is used in irrigation exclusively. It also helps to manage water. ठीक है? Water management में ये काफी इस्तेमाल करते हैं. The farmers are using it extensively these days. Drip irrigation has been taken over by a lot of farmers just so that they can help with the water management. And last but not the least, it is Bowery. Moving on, the last thing that we have to understand in this chapter is that there is an uneven distribution of water, right? There are places where there is abundant amount of water, there is a lot of rainfall that is happening, and then again in the same country you will find that there are places where there is no rainfall at all. Because of this how do I say, distribution of water, not everybody has the access to clean water. And if there is no clean water available, then you do know that a lot of waterborne diseases can occur, right? Now this is something that we have to look for. We are supposed to manage water, we are supposed to take care of this vital resource water, just so that this uneven distribution of water can be reduced. ठीक है? ताकि सबको access मिल पाए पानी का. Moving on, we should try to avoid wastage, and every individual should use water economically, which is obvious, right? We are supposed to use water economically. ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहा है तो पानी बस ऐसे खोल के छोड़ दो. ऐसा नहीं है कि एक दिन मन किया नहाने का तो 10 बाल्टी से नहा लिया. No. I mean, yes, it might be for you, 10 balti is nothing, but do you understand that there are people who are not even getting a drop of water to drink? तो अगर आप 2 बाल्टी से नहा लोगे तो शायद बाकी के जो 8 बाल्टी है वो उनके पास चले जाए. Are you getting my point? So yeah, try to use water economically. ठीक है? Plants wilt and ultimately dry up if they are not watered for days. पानी सिर्फ हमें ही जरूरत नहीं होती, बल्कि पानी प्लांट्स को भी जरूरत होती है, एनिमल्स को भी जरूरत होती है. और अगर हम ये करना चालू कर दे, अगर हमने नहीं सोचा, तो that day will not be far away when all the the autotrophs, the plants will also dry up and we will not have any food. All right guys, moving on to the next part. Recharge of water to the ground should be increased. It is the need of the hour that we try our best to increase the groundwater level, because I told you that groundwater level is depleting day by day, and I really want you all to understand how to increase the groundwater level. You should start conservation of rainwater and everything, just so that the groundwater can be recharged as soon as possible. All right guys, and that was